Hello everyone. So a quick tutorial on circular arrangement because we had already done linear earlier. So let us quickly understand few basic points जो circular में काम आएंगे. For example, अगर आप circular arrangement के question practice करने जा रहे हो, then you should have some idea as to what are the few things, few standard assumptions that you might have to take in order to solve those questions. तो वो basic चीजें हम समझेंगे. And then of course from time to time I'll keep on uploading various questions from different topics because DILR, it is very difficult to let's say restrict DILR within or confine it within let's say 5-7 topics. DILR अपने आप में बहुत यूनिक है, हर सेट अपने आप में अलग होता है, but still there are some topics जिसमें fundamental की जरूरत है, which is why I've already uploaded a lot of fundamentals and I'll continue to do that from time to time, and we will also keep on discussing questions. ठीक है, तो जल्दी से सर्कुलर अरेंजमेंट कवर कर लेते हैं. So what are the few basic things that we are supposed to know in a circular? Now अब देखो लीनियर में वी ऑफन से सपोज मैं अगर ये 4 पोजीशन बनाता हूँ 1 2 3 4 एंड आई से दिस इज लेफ्ट and this is right. Okay, now if I put A over here and I tell you that B is to the right of A, then technically you can put B at either 3 or you could also put B at 4, right? So you are never sure because right में कहीं भी anywhere to the right of A. But if I were to draw a circular arrangement, right, let's say there are 6 positions. Let me number them. And if I put A over here, and now if I say the same thing that B is to the right of A, अब आपको दिख रहा है B कहीं भी हो सकता है 2 3 4 5 6 because अगर right बोलेंगे तो right तो कहीं भी हो सकता है. There's no end to that. And suppose मैं किसी इंसान को यहाँ बिठा देता हूँ, suppose C को यहाँ बिठा देता हूँ, then in one way you could say that C is second to the left of A, but you could also say that C is fourth to the right of A. Both will be correct. तो अगर ऐसा है then there is no clear concept of left and right in circular arrangement, and if that is the case then we need to take certain assumptions. So the very first thing to be understood is that left or right means immediate left, immediate right. तो अगर मैं बोल रहा हूँ B is to the right of A, then definitely I want to say that B is sitting at 2, right? अगर मुझे ये बोलना होता B is at 3, I would specifically say that B is second to the right of A or fourth to the left of A. I will give very clear instructions, right? Then circular arrangement के questions जो होते हैं, of course it can be a circular arrangement, but you might as well get questions which are rectangle tables. वो भी circular के अंडर में ही आता है. There you might get something like this, right? 8 people sitting like this, so 3 on the longer side, 2 on the shorter side, so something like that could happen. So the funda for both rectangular and circular table will be similar with very minor differences. For example, circle में अगर हम 8 position बनाएंगे then it would be somewhat like this. यहाँ पे you know that someone who is opposite to you is same distance from both sides, right? But circle में not necessary. For example, यहाँ पे if I say this is 1 2 3 4, 1 and 4 are opposite. इस side से इतना लंबा distance है, but इस side से बहुत छोटा distance है. So that will vary in a rectangular table kind of setup. But otherwise, the left and right thing and whether which side they are facing, all those things are very similar to circular arrangement. Okay, let's move ahead. Let's understand a few more standard assumptions. So first thing, if nothing is stated, all must be facing the center. तो अगर हमारे पास एक circular table है, then कभी कभी क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 8 people sitting around a circle, right? So sometimes they'll tell you that 3 of them are facing the center, 5 of them are facing away from the center. अगर ऐसा बोल दिया है then of course you will accordingly
accommodate for that. बट अगर ऐसा नहीं बताया है, अगर आपको कुछ बोला ही नहीं गया है, देन यू हैव टू टेक अ स्टैंडर्ड assumption. आपको ये समझना पड़ेगा दैट दे ऑल आर फेसिंग द सेंटर. सो इफ नथिंग इज स्टेटेड, सबके सब सेंटर फेस कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट, there are only two directions, towards the center and away from the center. तो for example, हम अगर हम linear का बात करेंगे तो technically there are four different directions. There is a north, there is a south, there is an east and there is a west. ये बात और है कि अगर हमें बोला जाता है all of them are facing south, तो हम यही assume करते हैं सबको यहीं पे देख रहे हैं, because it's easier. जो हमारा लेफ्ट है वही क्वेश्चन में जो लोग बैठ रहे हैं उनका भी लेफ्ट है. इट इज मच इजियर टू विजुअलाइज थिंग्स दैट वे. बट theoretically speaking, there are four different directions: north, south, east, and west. But when we are talking about circular arrangement, दो ही directions है. Either you are facing the center like this, or you are facing away from center like this. Right? Exactly opposite is a phenomena, or is a term that will arise only when number of positions are even. So it requires even number of positions. So let's see why. So again, let me make another circular table. So again, let's say we have 8 people. Let me make a second one. Okay. तो अगर हम इसका ऑपोजिट देखें, इट इज टेक्निकली हियर. इसका ऑपोजिट इज टेक्निकली हियर. इसका ऑपोजिट इज हियर. इसका ऑपोजिट इज हियर. एंड इसका ऑपोजिट इज समवेयर अराउंड हियर. तो कोई भी किसी का ऑपोजिट नहीं है, बिकॉज देर आर टोटल 5 position, which is an odd position. But when we have even number of position, because देखो सर्कुलर अरेंजमेंट में एक नॉर्मल सी बात है, वी विल ऑलवेज अज्यूम कि इन लोगों का जो डिस्टेंस है, जो लोग बैठे हुए हैं, और वॉट एवर पोजिशन आर गिवन, दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ये यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है, राइट. दैट इज अ स्टैंडर्ड असम्पशन. इसीलिए ऑपोजिट का क्वेश्चन तभी अराइज होगा व्हेन यू हैव इवन नंबर ऑफ पीपल. तो फॉर एग्जांपल, ये इफ आई लुक एट द फिगर ओवर हियर एट द टॉप, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 8 पोजिशंस आई हैव मेड. एंड 8 पोजिशन में क्या होगा, 1 इज ऑपोजिट 5. एंड हाउ टू मेजर दिस ऑपोजिट वाला फंडा, तो आई हैव 3 पीपल फ्रॉम 1 to 5. अगर मैं 1 के राइट से मूव करता हूं, सो देर आर 2 3 4 इन बिटवीन एंड देन वी रीच 5. और मैं अगर 1 के लेफ्ट से रीच करता हूं तो भी देर इज 8 7 6 3 पीपल इन बिटवीन एंड देन वी रीच 5. एंड 1 and 5 आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ईच अदर. सेम केस अप्लाइज टू लेट्स से 2 6 और 3 7 और 4 8. तो हर बार वही दिख रहा है हमें, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, दे आर ऑपोजिट ईच अदर. तो एग्जैक्टली ऑपोजिट तभी हो सकता है व्हेन वी हैव इवन नंबर ऑफ पोजीशन. और अगर ऑड पोजीशन हो गया, जैसा कि नीचे वाले फिगर में आप देख पा रहे हो 1 to 5, nobody is opposite the other. So if the question has not stated clearly कि कितने positions हैं around the circle, but they have made it very clear that someone is opposite the other person, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए number of people around the circle are even. Okay, next, n places away is equal to n minus 1 places in between. ये मैंने शायद linear में भी बताया था, and I am repeating again, so the same funda applies. तो for example, अगर मैं ऊपर वाले फिगर में अगर मैं बोलता हूँ A जो है वो 1 पर बैठा है. Now if I say B is 3 places away from A, तो 3 places away हम कैसे काउंट करेंगे? Either we can do manually. Suppose A के राइट में 3 places away, so 1 2 3, that is 4 this position. यहाँ पर B, so B is 3 places away from A. But 3 places away हम कैसे कर सकते हैं? We can also look at it this way, that 3 places away is equal to 3 minus 1, that is 2 places in between. राइट. तो इफ आई से बी इज 3 places अवे फ्रॉम ए, तो राइट साइड से जाओगे तो 2 and 3 इन बिटवीन 4 आ जाएगा. लेफ्ट साइड से जाओगे तो 7 and 8 इन बिटवीन, एंड देन बी कुड आल्सो बी एट 6. तो बी विल बी ईदर 4 और 6. राइट. तो n places अवे इज इक्वल टू n minus 1 places in between. Alright. Then one last funda. If n number of places are around a circle where n by 2 places
where n is an even number, then n by 2 places away will always be opposite. So let's see. Suppose ये circle and position हमने बना दिया, and let's number them again. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो there are odd number of places, sorry even number of places which is 8. तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 8. तो where n is an even number, of course 8 is an even number. Then n by 2 places away, that means n by 2, यहाँ पर 8 by 2 हो जाएगा 4. तो 4 places away will always be opposite. तो आप चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, सपोज 8 से 4 places away, 1 2 3 4, तो 4 is opposite. Then let's say 6 से 4 places away, कहीं से भी गिन लो आप, 1 2 3 again 4, so opposite 6. So you can see that if you have n number of places which is an even number of places, then that even number divided by 2 will always be opposite. तो अगर मैं बोलता हूँ there are 20 people sitting around a circle, then 10 places away would definitely be opposite. Again ये shortcut कई जगह काम आता है, so we should remember this. More other than this, I think अगर आप linear arrangement के भी basics देख लोगे, that will be much more beneficial. I am sharing the link in the description, तो आप वो भी visit कर सकते हो. And once you are done with the fundamentals of both linear and circular, then you are in a reasonably good position to start practicing. अब देखो LRDI में the only way to improve solving questions is by practice. ये basic फंडे थे जो हमें याद रखने चाहिए, and बाकी once we practice we will understand different approaches, we will understand अलग अलग point का क्या implication होता है during solving itself. Alright, so hope this was helpful. Thank you all.